अच्छा ये आ गया उसका empirical formula, right? So it says that a molecule contains carbon, that's 40%. अच्छा उसी के अंदर it also contains hydrogen, that's 6.7% by mass, and there's oxygen, which is वो कितना है 53.3%. अच्छा अब होगा ये कि the first step ठीक है empirical formula, you find the moles, you divide by the MR, so carbon is 12, hydrogen is 1, oxygen 16, so I'm just going to do that ठीक है. So this one come बीच वाला तो पता है, that's going to come out to be 6.7. What about the other ones? That's 40 divided by 12. So that comes out to be 3.33. And what's 53.3 divided by कितना करना है 53.3 को divide करो 16 से. That also comes out to be 3.33. And then you figure out the whole number ratio. So you divide by the smallest, which I mean नजर आ रहा है कि it's going to be 1:2:1, right? So the formula is going to be C1, H would be 2, or O at the end, that's 1. So it's either A or B. और फिर कह रहे हैं कि the MR is now that's the empirical formula. That's the simplest ratio. उसने ऊपर लिखा हुआ है कि the MR of this is 60. So what is this? That's 12 plus 16 कितना होता है 28. 28 plus 2, that's 30, right? So the empirical formula is coming out to be 30. So if the actual formula has a mass of 60, तो उसका मतलब है the ratio would be the same, but the number of atoms would be double क्योंकि it's the actual mass is double, right? So it's going to be B. कि आपका empirical formula तो ये आया था, ठीक है? That's the simplest ratio, 1:2:1, right? But the mass of the molecule that they said the MR was coming out to be double. So that means you had the same ratio, but the number of atoms was double the atoms shown in the empirical formula. तो इसलिए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर बी है. अच्छा अब ये कि अच्छा अब next one is how many tons of aluminum oxide are required to produce 27 tons of aluminium? तो मोल्स का क्वेश्चन है. So how many tons of aluminum oxide? तो कितना एल्यूमिनियम ऑक्साइड चाहिए Al2O3, ठीक है? That's so he's trying to produce aluminium out of it. So मतलब you don't need the complete equation, so you can know the ratio के एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड से 2 एल्यूमिनियम्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है? 1 एल्यूमिनियम ऑक्साइड will produce 2 aluminiums, right? तो उसके अंदर फॉर्मूले के अंदर 2 है तो 2 ही बनेंगे, ठीक है? तो अब वो कह रहा है कि बनाने कितने 27 टन्स, राइट? सो रिमेंबर, अच्छा व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज ये टन शन मैं खत्म कर देता हूँ, मैं इसको ग्राम्स कर लेता हूँ, ठीक है? उस जो भी वैल्यू आएगी ना आई जस्ट राइट मोल्स, ठीक है? अच्छा ये मैं एक सेकंड जवाब दे दूँ. अच्छा ये याद रख लो कि जीसी और आईजीसीएसई में मेरे को इतना जमीन आसमान का फर्क नहीं है. 99% सिलेबस सेम है, 99% क्वेश्चंस भी सेम ही है. तो इसलिए इसलिए इट्स काइंड ऑफ द सेम, ठीक है? चलो उतनी देर ये ऐसे ये कर लेते हैं 27. सर रिमेंबर 27 टन्स, वो कन्वर्जन के अंदर मैं नहीं जा रहा, ठीक है? व्हाई वेस्ट टाइम कन्वर्टिंग स्टफ? व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम जस्ट गोइंग टू think of it as grams, ठीक है? And I'm going to solve it as grams without doing any conversion. So 27, so basically he's asking 27 grams of aluminium. So how many moles is that? So what is moles mass divided by molar mass? So 27, and the AR of aluminium is also 27. So basically वो कह रहा है कि 1 mole, right? तो 1 mole बनाने हैं तो you can use ratios, right? It's 2:1. तो हनान ये देख लो कि तो 1, ठीक है ना? अच्छा तो देख लो कि 2:1 है, so according to this ratio it's going to be 0.5 moles. You just need 0.5 moles of aluminum oxide and you can calculate the mass of this.
mass कैसे निकालोगे? Moles is what? Moles is mass divided by molar mass. Aluminium oxide is what? 27 into 2 हो गया. Oxygen 16 होता है. 16 times 3. So that's 102. ठीक है, तो mass आ जाएगी 102 into 0.5. That's going to give you 51. So B is the answer. 51. लेकिन obviously I just took it as grams. तो अगर ग्राम से सॉल्व करें 51 आ रहा है, so I mean just think of it as 51. Think of it as 51.